हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल जय जगन्नाथ पिलाने हेलो हाय नमस्ते कैसे पिलाने समस्ते तो एग्जाम पाई वरी हेवा दरकार नहीं जेते कूल रे रहिबो पिला माने सेते इजीली सॉल्व करि परिबो जेते कूल रे रहिबो माइंड पीसफुली रखो वरी हेवा दरकार नहीं वरी हेले केबे भी कोनोसी प्रॉब्लम सॉल्व होबो just cool your mind and think how should we face it माने मु केमिति फेस करि परिबी इजीली सॉल्व होबो आराम से देखिबो क्वेश्चन भी इजी रहिबो आ तमे माने भी बेस्ट एग्जाम दो जदी भाबुछ मु आज वरी रे अछि देन थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर थिंकिंग करो हे जिवो हला तो हमर चलतिला कोन रीजनिंग बेस रो हमर चलतिला डिस्कशन तो हम रीजनिंग बेस देखिबा ऑलरेडी कोन मैग्नेटिज्म एंड ऑब्जेक्ट और मैग्नेटिक सब्सटेंस रो सरी जाई मैग्नेटिक तो एबे जदी देखियो हमर जदी देखिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो why should why the magnetic flux why should the magnetic flux linked with why should magnetic flux linked with EMF or current EMF or current ये पहला आंसर पहला पिला ने एटा कोन होबो तो आर अर्थ होला जो मैग्नेटिक फ्लक्स अछि सेतिरे कोन रीजन अछि तो कोन होछि तो आमे कोन जानछंती जेते फ्लक्स चेंज हबो सेते ईएमएफ जनरेट हबो तो अकॉर्डिंग टू Faraday's law when the EMF induced by a coil sorry when the flux changes in a coil or a loop, it produces or induces some EMF. So when the flux change, the rate of flux change with the time is known as induced EMF. तो कौन हम induced EMF होचे तो कौन हम एटा हमारा लिंक होची आगामी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक मैग्नेटिक फ्लक्स magnetic flux. So second time we देखो what happened what happened when a current carrying coil is taken nearer to another coil connected with connected with galvanometer galvanometer सहित कनेक्ट है कौन इफेक्ट है तो इना कौन फैराडे फर्स्ट लॉ तो मतलब पिला तार एक्सपेरिमेंट আছে गोटे कॉइल रो अछि दीटा कॉइल रो अछि गोटे बार मैग्नेट रो अछि सेम आंसर so when a current carrying loop is taken in nearer to the coil connected with galvanometer it changes its flux rapidly so it induces some EMF in it so it get deflected एटा कोन हो डिफ्लेक्शन हबो तो सेमिति कॉइल करंट के बोले सोलेनॉइड गोटे बार मैग्नेट माले सोलेनॉइड दे देखियो कोन इफेक्ट हबो तो अबे जे देखियो लेंजेस लॉ ऊपर हां अबे जे देखियो what is the effect of what is the effect of a magnet or bar magnet taken near to a current carrying loop so according to Lenge's law we know that
the same polarity developed in a coil when it taken nearer to it, same polarity developed because it opposes change according to Lenz's law, it opposes change in flux in coil. ये change in flux coil रे oppose करती ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହବ ଏଠି इफेक्ट ଟା ଦେଖେଇବ ତ ଆର ଯଦି ମନେ ପକେଇବା କଣ ହବ पास आने नहीं देंगे दूर जाने नहीं देंगे कौन हबो जेतबे साउथ पोल ला पाखु आनेबा तो कॉइल रे कौन हबो जो पार्श्व माने जो पटटा आनिबा जो साइड रे आनिबा से साइड रे कौन हबो साउथ पोलैरिटी डेवलप हबो जदि नॉर्थ पोल टा आनिबा तो नॉर्थ पोलैरिटी टा डेवलप हबो तो कौन हबो पास आने नहीं देंगे दूर जाने नहीं देंगे पास को आसिया देलानी दूर को जीवा दबनी जेतबे साउथ पोल ला को दूर होनेबा तो सेही साइड टा कौन हबो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हबो और जो नॉर्थ पोल टा नेबा तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हबो तो ई चैप्टर आउट द क्वेश्चन why should why should a copper plate with top vanish swing in a magnetic field तो एटा हम जानते एडी करंट तो स्टॉप है होची तो when the copper plate swings in between a magnetic field it induces some current in that copper plate and that current is known as eddy current and it opposes change in flux rapidly in that place અને કોણ હોଉଛି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟା ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେବାରୁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛିଟା ଇଏମଏଫ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଇଏମଏଫ କରେଣ୍ଟ ଟା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ହବ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଟା ଇଣ୍ଡି କରେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଏ କଣ କରେ ଅପୋଜ କରେ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାପିଡଲି କଣ ହବ ସିଏ ସ୍ଲୋ ହେଇକି ସେ ମଝିରେ ରହିଯିବ ହେଲା ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା when the numbers of turns are increased in a coil, then what type of effect can be observed in that coil? तो यदि एटा सेल्फ इंडक्शन रो क्वेश्चन यदि नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करा जाए गोटे कॉइल रे सेते कोन इफेक्ट देखा जीवो तो कोन काहे की ये टाइप रो कोन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तो पिला माने हम जानते द नंबर ऑफ टर्न अकॉर्डिंग we know that in self induction the number of turns is directly proportional to the self inductance if the number of turns increases in a coil, then the self-inductance is also increases because we know that L or self-inductance equal to mu naught permittivity into mu naught into N square number of total length area cross section or L square capital N by L into A the self inductance ବଢିଯିବ ତ ହେଲା ତ ଏବେ ଲେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା mutual induction ର if two coils are perpendicular to each other then which type of effect are can be observed तो बीटा coil जदि perpendicular to each other means ଗୋଟେ coil ई प्रकार ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ coil ई ପ୍ରକାର so perpendicular ରହିଲେ the mutual induction will be zero so kahi when they are parallel to each other in that cases we observe the mutual induction otherwise when they are in same axis the mutual induction will be
effective. So if they are perpendicular to each other, on that case their net field will be zero. Their net field will be zero. ହେଲା ତ ହେଲା ତ electric ତାପରେ ହଁ ଆଉ क्वेश्चन ଯଦି when except a loop when a loop rotates in a magnetic field which type of variation will occur ମାନେ ଯଦି ଆମର କଣ ହବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ କୁ ଆମେ ରୋଟେଟ୍ କରେଇବା ଦେନ୍ କୋ ଟାଇପ ର ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇବା we know that E equal to E naught sin omega t when a loop is changing its area in between a magnetic field, it produces some EMF. So E equal to E naught sin omega t, and the angle between the magnetic lines of force and area of the loop changes rapidly. It produces an alternating current. It produces an alternating current. କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି E equal to E naught sin omega t. actually rotation ରେ E equal to E naught sin omega t. omega t କାହାକୁ theta କୁ ବୁଝଉଛି ତ 0 डिग्री sin 0 ରେ କେତେ ବୁଲାଉନି sin 0 ରେ 0 sin 90 ରେ maximum value then sin 180 ରେ ପୁଣି 0 sin 270 ରେ negative maximum पुणे sin 360 रे 0 means the sinusoidal wave means it induces an AC source or alternating current source. Then देखिवा electromagnetic induction. Electromagnetic induction रे यदि देखिवा से कौन पचरियो प्लान आर्गुमेंट टाइप रो रीजनिंग पचरियो कौन आर्गुमेंट टाइप रो तो दीटा स्पेक्ट्रा भितर जो दीटा स्पेक्ट्रा भितर कौन रिलेट अछि एक टाइप रो सब पचरियो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे कौन इफेक्ट अछि ए एटा पचरियो न मैक्सवेल थ्योरी ऊपर गुने की कौन अछि डिस्प्लेसमेंट करंट और कौन वैल्यू अछि एम्पियर्स लॉ रो कौन इंपोर्टेंस अछि तापरे बाईस वर्ष लॉ रो कौन इंपोर्टेंस अछि तो मैक्स डिस्प्लेसमेंट करंट के व्हाई कॉज नोटिस व्हाई कॉज पर क्वेश्चन पचारि बाय डिस्प्लेसमेंट रो कौन रोल प्ले अछि ହେଲା तो कौन अछि आज को कौन हमरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दा भलो से प्रोड्यूस हे पाउछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ता प्रोड्यूस हे पाउछि तो प्रॉपर्टीज से तो पचारि हम और स्पेक्ट्रम रो पचारिबो ହେଲା तो पिलाने मु आशा करछि এই ভিডিওটি ভালো লাগিथिबो नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा अल्टरनेटिंग करंट रो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स अछि जहा पर कि बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन जे कि चैप्टर रे देखिले से चैप्टर रे अछि तो आशा करछि मो सहित वीडियो भी थिबो भल सहायक होथिबो एंड लाइक से सब्सक्राइब करथिबो लाइक से सब्सक्राइब करियो वीडियो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे